Okay, so we will design a document on my classroom today. So first of all, what we have to do, we have to open our application, that is Microsoft Word. So you just have to write Word, or if you have downloaded in your phone, so you can just click and open that app. But if you are working on laptop or computer, then you have to write and you have to find out for this application, that is your Microsoft Word. Okay, so this will be open. Now what you have to do, either in phone or mobile, you have to click on blank document. Okay, so this will open in front of you. One second. So next what we have to do, we have to create a document, and document should be of what kind? My classroom. So we will start writing here. जहाँ भी आपका cursor है, just start writing. Okay. So I will write here my classroom. As given in the book, topic should be my classroom. So we have write this thing. Now what we have to do, we have to make it bold. हमें इसको bold करना है और सेंटर में अलाइन करना है. बट उससे पहले फर्स्ट स्टेप क्या दिया हुआ है आपकी बुक में, यू हैव टू चेंज द फॉन्ट and the size and the color. Okay, so we will go that with that one. So first of all, we have to change default font type, color and size. So we will do the same thing. What we have to do, we will select this content, my classroom. From this font group, we can change the, what we can change? Font style. So here you can select anything, whatever you like, you can go with that one only. Okay. Many fonts are available, so you can go with the any font style you would like to add. So if I will go with this one, not this one, because we have to make it bold, so we will take a simple one so that bold effect will be visible also. This one I have taken. Okay, so we have changed the font from this font group. Next we have to change the size, so we will go with 16. Clear? And next, font color we have to change. From this A, you can change the color also. So what color you want to pick? Green. Is it visible? Okay. So now first step is completed. हमने font type change किया, font size change किया, font color change किया. Next, make the title bold and set alignment to center. अब हमें क्या करना है, इसको bold करना है, and from this font group only we can make it bold. So you just have to click on B. It will be bold. Now next is alignment. आपको इसको center में align करना है. आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड है टेक्स्ट, आप क्या करोगे, इस पैराग्राफ टैब में आओगे. ठीक है, यू कैन सी हियर अलाइनमेंट ऑप्शन, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई एंड सेंटर. तो सेंटर के लिए हमारा ये है. तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, आपका टाइटल कहाँ आ गया, सेंटर में. एनी डाउट इन हियर, एनीवन? Is it clear how we can change font type, font color, font size, how we can do bold and how you can align in center? Next. So next point, highlight the title with bright green color. अब उन्होंने कलर का भी ऑप्शन दे दिया कि इसको हाईलाइट करना आपको ब्राइट ग्रीन कलर के साथ. So we will go back and check for bright green color. So we have already, so this one is bright one, so we will go with this one, bright green color. Okay, done. Now move back and look for the next instruction. Next is use bullets and number wherever possible. तो अभी हमें क्या करना है, माई क्लासरूम के ऊपर हम कुछ लिखेंगे. ठीक है, फिर हम उसमें कुछ नंबर्स और बुलेट्स ऐड करेंगे. ठीक है. नाउ स्टार्ट राइटिंग समथिंग अबाउट योर क्लासरूम. अब देखो, बाय डिफॉल्ट आपने सेंटर में किया था, तो आपका कर्सर यहाँ आएगा जब आप एंटर प्रेस करोगे. बट हमें सेंटर में नहीं लिखना, तो आप वापिस से पैराग्राफ में जाके लेफ्ट करोगे तो आपका कर्सर यहाँ लेफ्ट में आ जाएगा. क्लियर? I will scroll down the screen a little bit so that it is clearly visible to all of you. Yes. Is it clear now, everyone? Okay. So now we will start writing what you would like to add my classroom, and we will take one paragraph from internet only.
Okay, so you can take the content from internet also, or you can type my classroom. It's working slow. Okay. So you can write here, hello everyone. Hello everyone. Okay. I am in which standard? Fourth standard. I am in fourth grade, or you can write I study in fourth grade. Anything you can write. I am in fourth grade and fourth grade Iris. Or you can take any section name. It totally depends upon you. I am in fourth grade Iris. Students, name of my sections are, okay, so in this way you can write. So अब आपको क्या करना है, आपने ये लाइन लिखी, then what you have to do, आपको स्टूडेंट्स के नाम देने हैं, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या दिया हुआ बुक में, इफ यू विल रीड, Vedika, check audio settings from your side, beta. Everyone, anyone else having audio issue? Just confirm. Show me thumbs down who is having audio issue. Okay, no one is sending. So Vedika, please check connection from your side, beta. Okay, so next point is यूज बुलेट्स एंड नंबर वेयर एवर पॉसिबल. तो नंबर हम बुलेट्स कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं. अब आपको स्टूडेंट्स के नाम लिखने, तो हम उनको पॉइंट्स में ले लेंगे 1 2 3 4. तो उसके लिए हमें क्या करना है, अब तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद, ठीक है, you have to come here in paragraph group. Okay, in paragraph group we are having this numbering option. Okay, so अगर आपको नंबर लिखना है 1 2 3 A B C, या फिर आपको कुछ डॉट यूज करने हैं, then you can, Vedika, check settings from your side, because all the students having no issue. We are having 24 students in the class except you. Everyone is able to listen to me, so please reconnect, or you can rejoin the class. Maybe network issue or some audio issue will be resolved. Okay Vedika, just left this meeting and rejoin. Okay, अगर आपको नंबर यूज करने, so you can go with this. अगर आपको बुलेट्स मीन्स कुछ साइन यूज करने, so you can go with this bullet library. आपकी चॉइस है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो. So if I am going with this numbering system, I will go with this one. So by default यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा. So now I will start writing the name. So name we are having Anu. When I will press enter, automatically 2 will be there. So next I am taking Aradhya. Okay, next name we are taking Bhavana. So in this way you can enter Savna. Okay, I will write here Bhavana. And next you can write John. Enter, then you can write David. Enter, you can write Hari. Any name you can write. Okay, so see हमने क्या किया, बुलेट्स और नंबर को ऐड कर दिया. आर्य. Okay, go with Anya. So next, add a border to page. नंबर्स ऐड किए, फॉन्ट ऐड किया, कलर ऐड किया, अलाइनमेंट किया. नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि हमें पेज का बॉर्डर ऐड करना है. हाउ यू कैन डू दैट, ये आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है. अब हमें क्या करना है, हम इसका साइज छोटा कर देते हैं. आपको सिर्फ टाइटल का साइज बड़ा रखना है, बाकी डॉक्यूमेंट का छोटा करना है, तो आपको सिलेक्ट करके उसको छोटा करोगे, ठीक है. सिर्फ टाइटल आपका अलग से थोड़ा बड़े साइज का होना चाहिए, बाकी आप छोटा रख सकते हो. क्लियर. अब हमें क्या करना है, पेज बॉर्डर ऐड करना है. सो हाउ यू कैन डू दैट, इन
layout. Okay, so in design we will go, no, in home we will go. Okay, so in home only, where is page option here? We are having page option. Okay, so here is only page number, page break, and page border. Design, no. Here is your page border. Okay, in design we are having page border. So these are different page borders available. आपको जो भी पसंद आए, ठीक है? One second, beta. I am your mother complaining him. Ma'am, Netik is not live class attend. He see YouTube. Doubt counter. The personal number. What happened, beta? Where is Netik? One second. Netik, where are you, beta? Why you are not joining your class? This is mandatory, and in periodic test this practical will be there for 10 marks. So if you will not send me PDF for your practical number, you will get 0. Question answer नहीं होंगे subjective paper में, only practical work will be there. Okay, so next we have to add border. So we are having different kinds of border. जो भी आपकी choice हो, जो भी आपको पसंद आए, you can go with that one. Okay, so if I will take this one, then we are having some color options also. आपको किस color का border add करना है, you can choose that one also. Done? Okay. In this way, you will be able to see this border, this red line. ओके आप चाहो तो इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हो, इसको थोड़ा मोटा करना है, छोटा करना है, जो भी आपको करना है तो आप कर सकते हो. फिर आप इसमें डिजाइन भी चेंज कर सकते हो. क्लियर? सो वी हैव डन दी बॉर्डर पार्ट. नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग only one point is there now, so we will complete that one also. Next is change the page margin to moderate. अब आपको मार्जिन चेंज करना है, कैसे करोगे? So in home only we are having that margin option. This is your 365, but if you are using Microsoft, then that will be in your home page only. Page number we have to insert in footer. Okay, so page margin is here. So we have to change this to moderate, and here we are not having moderate option in 365. Okay, so we will go with the circle left, and here we will insert footer from bottom, go to footer and insert the page number, footer, and 1. Okay, so in this way you can insert the page number.